Hello students, in our last video we studied quadratic equations, and in this chapter till now we have learnt what is the meaning of a root of a quadratic equation, how to check whether a specific value of a variable is a root of a given quadratic equation or not, how to determine whether a quadratic equation has real roots or not, and how to find roots of a quadratic equation. Now in this video we would learn quadratic formula to find roots of a quadratic equation. But before doing that, let me tell you whatsoever you know already. All of you know that a plus b whole square, a plus b whole square can be written as a square plus 2ab plus b square. Using this identity, I can write 3x plus 2 whole square as 3x whole square means 3 3 ja 9x square plus 2 2 ja 4 and 2ab 2 into 3x into 2, and it can also be written as 3x whole square plus 2 into 3x into 2 plus 2 square. Now please notice one thing carefully here. If something whole square is here plus something whole square is here, and in between there is twice of the first term and the second term, then it can be written like this. These two terms which are in perfect squares here, 3x and 2, so 3x and plus 2, and in between these two terms there is positive sign जो 2ab वाले के हिसाब से लगेगा, तो that is plus sign. So I can write 3x whole square plus 2 into 3x into 2 plus 2 square as 3x plus 2 whole square. In the same way, if I am given 5x whole square minus 2 into 5x into 4 plus 4 square, then it can be written like this. 5x ये जिनका परफेक्ट स्क्वायर है, 5x का परफेक्ट स्क्वायर है और 4 का, तो इनको हम लिखते हैं, एंड इन बिटवीन जो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, तो 5x माइनस होल स्क्वायर. नाउ we are ready to understand the quadratic formula. So let us proceed to derive the formula. All of you know that a quadratic equation is written like this: ax square plus bx plus c is equal to 0. Now I would derive the quadratic formula by using the standard identity that I have told you already before this. So first of all, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो बी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव सी. आफ्टर दैट जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट इज ए, उसको हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं. तो उसको 1 बनाने के लिए आपके पास में सिंपल सा मेथड है, आप पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी. It was the equation, and I am dividing the complete equation by a. तो आपको याद रख लेना है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड्स पर एक ही नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इट ए गेट्स कैंसल्ड, सो आई एम लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए. आफ्टर दैट आई टेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ b by a. तो अब आपको इसका हाफ करना है. वाई दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. तो अब इसका हाफ करने का मतलब होता है इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. सो आई गेट b by 2a. सो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड्स पर इक्वेशन के b by 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देता हूँ. b by 2a होल स्क्वायर हियर एंड b by 2a होल स्क्वायर on right hand side and left hand side.
Now observe very carefully, the left hand side can be written like this: x square plus b by 2a whole square. As such I have written this one, and in between it was b by ax, so it can be written as b by 2a into x, और 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, मिडल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. Why I have done this? Please recall whatsoever I have told earlier. It is a square plus b square plus 2 into a into b. b by 2a ये दूसरी वाली टर्म है, x ये पहले वाली टर्म है. So it can be written as x plus b by 2a whole square. Now I take LCM on the right hand side, तो 4a square और a का LCM 4a square होगा. So by सिंपली 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 1 होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर. ए को आप इसे आप 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4a मिलता है, तो आई गेट 4ac. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, व्हाट डू आई गेट? इट विल बी x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर कट जाएगा, और रूट के अंदर आप इसको लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, और क्योंकि 4a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट सीधा सीधा निकल सकता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a, और प्लस माइनस साइन आप आगे लिख सकते हैं. आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट डाउन x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac after obtaining this expression I can write down x is equal to minus b by 2a plus minus root b square minus 4ac divided by 2a. So I get two roots of the quadratic equation, minus b by 2a plus root b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. मैंने ये पॉजिटिव साइन यूज़ किया है, एंड x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2a. नाउ आई एम यूजिंग दिस नेगेटिव साइन, सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ इफ आई add both of these roots, suppose this is equal to alpha and this is equal to beta, so I am writing here alpha plus beta. Simply minus b by 2a plus root b square minus 4ac divided by 2a minus, now I am adding this, I am adding the other root, minus b by 2a minus root b square minus 4ac divided by 2a. So when I open this bracket I get b by 2a negative b by 2a plus root b square minus 4ac divided by 2a minus b by 2a and minus root b square minus 4ac divided by 2a. Now observe very carefully this expression as well as this expression. Both are equal but opposite in sign. This is of positive sign, this is of negative sign, so these cancel each other. So I am left with minus b by 2a minus b by 2a, so I can just double that 2a, so it gets cancelled. So you got alpha plus beta is equal to minus b by 2a, and all of you already know from the chapter quadratic polynomials, the sum of zeros of a quadratic polynomial is minus b by a. Now I would try to find out the product of these two zeros. So it is alpha into beta. So I write first root, it was minus b by 2a, within root b square minus 4ac upon 2a, and other root is minus b by 2a, and here it is negative sign, so b square minus 4ac divided by 2a. So if I multiply both of these, you can see if I take negative sign common from here, so I get negative sign this one b by 2a, and it would be negative sign
and I get b square minus 4ac divided by 2a. And in the same way, if I take negative sign common from here, so this negative sign would become positive, and I get 1b by 2a plus root b square minus 4ac divided by 2a. Now see, it is a standard identity a minus b into a plus b. So I can write down b by 2a whole square minus root b square minus 4ac divided by 2a whole square. If I solve it further, so I get alpha beta is equal to b square by 4a square, and if I square it, I get only square root will be removed, माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, और नीचे 2a है, इसका होल स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर. नाउ 4a स्क्वायर इज एलसीएम, सो आई गेट b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये साइन चेंज हो जाएगा तो इट वुड बिकम 4ac पॉजिटिव. सो 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 गेट्स कैंसल्ड, इधर a है इधर a स्क्वायर है, सो आई गेट c बाय a. सो यू हैव गॉट a very important result that you already know. For a quadratic equation, sum of zeros is minus b by a and product of zeros is c by a. Now let me solve a sum to find roots of the quadratic equation 3x square minus 4x minus 3 by using quadratic formula. And I have written quadratic formula here, so let us try to solve it. So from here, if I compare these two equations, so we can write down here a is equal to 3, b is equal to negative 4, and c is equal to negative 3. So first of all, we can find b square minus 4ac. That do we call discriminant also, that we did in our last video. So b square minus 4ac. So b is minus 4 whole square, minus 4, a is 3, and c is negative 3. So if I solve it, I get 4 4 just 16. These are two negative signs, minus minus, so it would become positive. 4 3 is 12, 12 3 is 36. And if I add both of these, then what do I get? 2, I think it is 52. And after obtaining this result, what can we do? We have to just substitute the values, and I can also find out root 52 because I require root d here. So root d, root 52 can be written as 4 into 13, as 4 is a perfect square, so I can write 2 root 13. So root d I have obtained. So in order to find roots of the quadratic equation, minus in place of b I can put minus 4, plus minus in place of root d I can write down 2 root 13, and in the denominator 2 into a was 3. So I get this 2 negative negative becomes positive, plus minus 2 root 13 divided by 6. Now you can see 2 can be taken common from the numerator. So 2 plus minus root 13 divided by 6. So 2 1 ja 2, 2 3 ja 6. So I get 2 plus minus root 13 divided by 3. So these are the two roots of the quadratic equation. This 2 plus root 13 by 3 and 2 minus root 13 by 3. So do remember, it is very important to find d. As in the last video you were told that कि अगर किसी इक्वेशन में d पॉजिटिव आता है तो उसके रूट्स होंगे. फॉर दिस क्लास वी वुड से कि उसके रूट्स होंगे, दीज आर रियल रूट्स. एंड इफ d इज नेगेटिव, अगर d पॉजिटिव है या ज़ीरो है, इन दैट केस रूट्स आर रियल. एंड इफ d is negative, in that case you will say no real roots. In order to know the nature of roots, I am going to tell you, if d is greater than 0, then roots are real and unequal. अनइक्वल का मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे. मीन्स अगर एक 2 है तो दूसरा 2 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है. एंड सेकेंड केस इज if d is equal to 0, then roots are real and
इक्वल, इसका मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक -3 है तो दूसरा भी -3 होगा। थर्ड केस, इफ d is less than 0, so we can write down no real roots, or simply we can write down no roots, तो उसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, इफ d is a perfect square, d is a perfect square, perfect square means अगर d 4 होगा, 16, 25, 36 लाइक दिस, जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाता है, देन रूट्स आर रैशनल, मीन्स उसमें रूट नहीं आएगा। एंड सेकेंड, फिफ्थ केस, if d is not a perfect square, then roots are irrational. Now let us try to solve this question. The question says, for what value of k, quadratic equation x square minus 2 into k plus 1x plus k square is equal to 0 has real and equal roots. So how to solve this equation? Very simple. All of you know the condition for the real and equal roots. So first of all we would write, we know that for real and equal roots, d is equal to 0. Now d is equal to b square minus 4ac, that is b square minus 4ac is equal to 0. So what is b? b is minus 2 into k plus 1. I have to write its whole square, minus 4, a is 1, x square का coefficient 1 है, and k square is equal to 0. Now just एक्सपेंडिंग दिस, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ एक्सपेंडिंग दिस ब्रैकेट, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, आई एम लेफ्ट विथ 4 प्लस 8k is equal to 0. And if I solve it further, I get 8k is equal to minus 4 and k is equal to minus 4 by 8 and k is equal to minus 1 by 2. And that is the answer. So I think that is enough to solve the complete chapter quadratic equation. Keep on trying and use quadratic formula, factorization method, and all the knowledge that you are having from the chapter polynomials. So thank you, thanks a lot. Let us meet in the next video.